the Republic Media Network headquarters. It's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate. Good evening and welcome at the start of the week. The question is not whether Pakistan should host the Champions Trophy. The question is whether Pakistan can host the Champions Trophy, and the resounding answer is no. Because where there's cricket to be played, there are mountains of garbage and heaps of construction, ladies and gentlemen. I'm showing you the pictures and see for yourself. This is the Gaddafi Stadium. The condition is so bad, so bad. Ladies and gentlemen, there is no ground. There is no building. There are tents. There are scaffoldings. There aren't even walls. And I was informed that the Pakistan Cricket Board has just been told there aren't enough bricks or cement to make the stadium with, and therefore Pakistanis give up. You cannot and should not be allowed to host the Champions Trophy. It's not just that Pakistan is unsafe, their stadiums are unsafe, ladies and gentlemen. This construction can collapse any time. And there are lives of so many people watching the stadiums which is at stake. This is not a stadium, ladies and gentlemen. It is a symbol of Pakistan. It is a complete ruin, a ruin of a country trying to host a cricket match in a ruin of a stadium. How sad things are for Pakistan. In fact, the Pakistan Cricket Board Chairman Mohsin Naqvi has accepted that our cricket stadiums don't have seats. The head of the Pakistan Cricket Board says our cricket stadiums don't have washrooms. And he says there is a world of difference between our stadiums and that of the rest of the world. We do not have international stadiums. कोई भी स्टेडियम्स इंटरनेशनली क्वालिफाई नहीं किए जा सकते हैं, ना सीट्स है, ना बाथरूम्स और व्यू ऐसा कि आप 500 मीटर दूर तक ही देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, this is how the Pakistanis look at their own stadiums. In fact, Wasim Akram recently, when a fan questioned Wasim Akram, why is the PCB not investing in the infrastructure of stadiums? He said, सच्चाई तो ये है कि we cannot even maintain 3 stadiums. It's such a poor country, such a terrible country. Not a country at all. It's an apology of a country that he says, बाकी कहाँ नया बना लेंगे? गद्दाफी की छत देखी है. We cannot even control the roofs of the stadiums, ladies and gentlemen. In fact, the situation is so bad in Pakistan that whatever little they had, like CCTV cameras, got stolen. Batteries of generators installed for lighting the stadium were stolen by thieves. You see, Pakistan is not a country. It is a financial conundrum. It cannot be saved. It's over. And I appeal to all cricket-playing countries not to play cricket in these stadiums. It's so good our players are not going there. But it's terrible. Nobody will be safe. Players from England, New Zealand, South Africa, wherever. Do you think you'll be safe playing in a place like that? That's the reality of Pakistan, ladies and gentlemen. Debate 1 tonight. It is a significant debate. I'm picking it up because it's significant. Because if something happens on those locations, then who will be responsible for the lives lost? Debate number 2 this evening. We have a determined BJP not willing to let go of the Ambedkar issue, ladies and gentlemen. And on debate 3 this evening, did the Congress party send its goons behind the very popular Allu Arjun? Does Revant Reddy, who's teamed up with the Owaisi brothers, have an ego problem with Allu Arjun? Burning debate at 9 o'clock, and here are the headlines this Monday evening on the Debate Tonight. And this is the reality in Pakistan, ladies and gentlemen. Under construction stadiums, complete ruins. An incomplete venue for the Champions Trophy. We're investigating what's going on in Pakistan, and the general consensus is, even at this stage, no country should be allowed to host, should be allowed to risk itself by playing in Pakistan.
कांग्रेस पार्टी बताए कि डॉक्टर अंबेडकर का त्याग पत्र को क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में आने दिया गया, क्योंकि उसके आने से जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछलती। And the BJP refuses to let go of the Ambedkar issue. It says that the resignation letter of B.R. Ambedkar has been hidden by the Vadra Gandhi family because it would have exposed how badly this one family treated Ambedkar. It's Congress and Owaisi. Rahul Gandhi and Owaisi come together to take on Pushpa star Allu Arjun. A day after the vandalism at Allu's residence, pictures show that the accused could be a member of the Youth Congress, it's being alleged, and a close aide of Revanth Reddy. Ladies and gentlemen, I start with the situation. We got some pictures from Pakistan which are really, really terrible, you know. And the only conclusion we can come to is that Pakistan, as usual, has the same problem. It has no money to host the Cricket Champions Trophy. It is insisting on doing so. But the situation in the stadiums, the infrastructure is so bad, that you wouldn't even allow a local league to be played there, leave alone an international trophy. This is the situation. By the way, exposed by the Pakistani media. Pakistani media, for once, you've done a good job. You couldn't take on Hafiz Saeed. You don't have the courage for it, but at least you've reported on the terrible situation on your country's cricketing infrastructure, or rather, the lack of it. Let's debate. Embarrassed over the Champion Trophy tournament. Reality checked by the MEA. The BCCI has issued a statement, so I would refer you to the statement. They have said that there are security concerns there, and therefore it is unlikely the team will be there, going there. But please do refer to the statement issued by the Board of Cricket Control in India. Compelled to bow to the ICC. Pakistan has been forced to accept the hybrid model. And the same country that battled hard to play host now stands exposed by their own media. These are the visuals of Pakistan's Gaddafi Stadium. Heaps of garbage and mounds of construction debris. This is the reality that Pakistan is attempting to conceal. The cash-strapped nation bargained hard to save the PCB. But with non-functional stadiums and a complete collapse of infrastructure, is Pakistan really fit to play host? Across the world, especially in India, people are shocked when they see the situation of these stadiums. Actually, Pakistan Shaker does not have stadiums. We didn't realize this, but the Pakistani media exposed it. Can you play there? Shaker is joining Soumitra Bose, senior sports journalist tonight, and Hassam Durrani, senior sports journalist from Lahore, and from Islamabad, sports journalist Abu Bakr bin Talat. We're looking at the situation of the stadiums. Very bad, terrible. Shaker, can you play cricket here? I don't think you can play cricket. I think Pakistan has not hosted anything of importance since 1996. Yeah. If you look at it, they never had any experience in doing so. And I think the graphics tell the story, Arnab. The videos in terms of the garbage, the debris, the infrastructure is so bad, so deplorable. If you want to host a multinational tournament, you need people to come in. I think security is at a big risk here. And it goes without saying, right? The pictures tell the whole story. It is really bad, really deplorable. And from a security perspective, I don't think they should host it there. And I think India is right by not traveling there and by doing it at a neutral venue. But I think more than anything else, like I mentioned earlier, since 96, they have not hosted anything of national importance. They need experience in this, they need the infrastructure, which they don't have. And I think it all boils down to one thing, the lack of funds. And it goes without saying that they need to do much more than this if they want nations to come in and play there. Without infrastructure, without basic security, without even washrooms. Like you had mentioned, I think in the report, like there were stones which are still being laid. I've also seen videos where people were attaching seats. We are living in an age which is information specific, and here still you have people attaching seats. So I don't know in which stone age are they living in, but it's I think it's pretty bad. And for sports to be played, you need security to be of the highest level
infrastructure, security, and you've got so many, nations coming in and playing. So that- I don't know. Pakistan can take a leaf out Assam? of India's books because Yeah. India has managed it so well. Even Sri Lanka, for example, I think Pakistan can take a leaf out of our books itself about how they can host a tournament effectively. We have done this in the past. No, but they can do this in the future too. This is not possible. You see, anyone in the construction business or any layman can look at this and say it's not possible. See, Hassan, it's not an ego issue. I'm not trying to put Pakistan down as usual, but you don't have venues. You don't have the venues. And at least this has been accepted by Mohsin Naqvi or PCB chairman. We don't have international venues. If you don't have international venues, how do you expect to host an international tournament? देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी बात आपने जो बात की है, देखें ये भी बहुत करेज की बात होती है कि कोई शख्स जो है अपनी किसी कमी कोताही को मनोअन कबूल कर ले और सबके सामने कबूल कर ले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी तक जो मैं आपका पूरे का पूरा जो सिनेरियो जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान को तो इस दुनिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए और खासतौर पर क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अर्नब साहब, अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप रियलिस्टिक होकर अगर आप बात करें और थोड़ी चीजों को देखना शुरू करें तो इस तरह के दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर इसी तरह ही चीजें हो रही होती है, चाहे वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप क्यों ना हो रहा हो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, हॉकी की कोई टूर्नामेंट हो, तो आप अक्सर देखते हैं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही चीजों को रेनोवेट किया जाता है, उसके अंदर उसकी सिटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है। और अगर आप ये चीजें दिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान के जो है तारीख की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि पीसीबी ने जो है वो जो बीसीसीआई के सामने जो है वो उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। इससे पहले तक हमेशा ऐसा ही होता था कि जैसे भी इंडियन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी जो भी बातें होती थी उनको मनोअन कबूल किया जाता था। और अगर आप जिस तरह भी आपने बात की है आपके इंट्रो के अंदर, आपने जो रिपोर्ट हमें मैं अभी सुन रहा था कि कंपेल किया गया है पाकिस्तान को जबरदस्ती जो है हाइब्रिड निजाम के ऊपर लेके, सिस्टम के ऊपर लेके जाया गया है, तो आप ये भी तो आप बताएं ना आप कि अगर वो सिस्टम के ऊपर लेके गए तो उसके अंदर पाकिस्तान की जो है वो भी जो है वो शर्त मानी गई है कि पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर कभी भी जाके अगले 3 सालों तक कोई मैच नहीं खेलेगा। तो ये चीज है, इसका मतलब है कि कुछ ले और कुछ दे के ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं। बाकी ये जो चीजें चल रही हैं ये हमेशा ऐसी ही होती हैं और ये कुछ जिंदगी में ये पहली दफा नहीं हो रहा कि कहीं पे भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई टूर्नामेंट हो रहा है और वहां पे जो है वो स्टेडियम्स की हालत ऐसी है। तो क्या इंडिया के अंदर भी जब भी कोई बड़ी आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट होता है, ये ट्रॉफी हो रही है, तो कि वहां पे स्टेडियम्स को इसी तरह रेनोवेट नहीं किया जाता? इसी तरह होता है, सब कुछ चीजें होती हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें मुद्दा इस बात को बताया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तो इस काबिल है ही नहीं। हाँ, अगर पाकिस्तान जो है आईसीसी के कहने के ऊपर बीसीसीआई की वो तमाम शर्तें मान लेता तो मेरा ख्याल है आप ये प्रोग्राम ही ना कर रहे होते, आप ये बात कह ही नहीं रहे होते कि पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको असम जी मैं आपने जैसे बात कही, मैंने सब लोगों से बात की, पाकिस्तान में कई लोगों से बात की और उन्होंने जो कहा, देखिए हमें कंसर्न किस चीज से है। देखिए ये कोई हम आपके साथ तो कोई जंग में नहीं है। वैसे जंग में आप तो हार चुके हैं कई बार, वो तो अलग बात है, उसकी एक्सपीरियंस आपकी है। मगर बात यह है कि आपके अपने क्रिकेटर, आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही है कि वी कैन नॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स। उन्हीं के वर्ड्स हैं, बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं है हमारे 3 के लिए। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया उनका, पता नहीं, कोई आपकी मजबूरी होगी। बट वसीम अकरम कह रहे वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द 3 वी हैव।
मतलब जो तीन है, वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, नहीं वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम तो पाकिस्तानी है ना, नो बट वसीम अकरम पाकिस्तानी है, पैसा तो उनको इंडिया से मिलता है मगर है तो पाकिस्तानी, मगर वो कह रहे हैं वो कि हमसे तीन मैनेज नहीं हो पा रहे। सुन ले सर, आप भी सुन ले, मुझे आप कैसे लोगों का लाइफ रिस्क करने वाले, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ये आपकी परसेप्शन है ना, आपकी परसेप्शन है, मेरी परसेप्शन है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वसीम अकरम का। आपकी परसेप्शन पे दुनिया नहीं चलती ना। अरे वसीम अकरम की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मेरी परसेप्शन की बात ही नहीं है। अकरम जो मर्जी कह ले, लेकिन वसीम अकरम की बात के ऊपर आपने जो परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टेडियम, खासतौर पर कज़ाफी स्टेडियम की अगर आप बात करते हैं, जिसकी आप विजुअल्स आप मुसलसल मुझे आप दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, तो आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो मर जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपको क्या लगता है इधर कोई आएगा तो क्या होगा? सर बिल्कुल होगा, मैचेस होंगे, क्या होगा? आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल मैचेस होंगे, प्रॉपर तरीके से मैचेस होंगे। और ये आपकी ऐसे आप ये कोई लोकल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट नहीं है, इट इज नॉट, आप ऐसा मत करिए। चले सर, लोकल गिल्ली डंडा नहीं, रणजी ट्रॉफी का मैच करवा नहीं, गलत बात है, हम नहीं खेल सकते रणजी ट्रॉफी, ऐसे सिचुएशंस में नहीं खेलते। नहीं, आप कुछ भी नहीं खेल सकते, आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, आप सिर्फ एक नेगेटिव जो है वो चीजों को बिल्ड मुझे क्या करना है? आपसे नेगेटिव नैरेटिव, मैं नेगेटिव नैरेटिव नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको मैंने इसको पिकअप कब किया जब आपके पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है मसूद नकवी। अर्नब साहेब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर पाकिस्तान पीसीबी जो है वो बीसीसीआई की तमाम तर शराइत मान लेता तो क्या आप ये प्रोग्राम नहीं, वो तो आप मान चुके हैं, वो तो आप मान चुके हैं, वो तो आपको मानना पड़ेगा। इसे कहते हैं खसियानी पिली खंबा। नहीं, यू आर गोइंग टू डू हाइब्रिड, वी आर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे। आपके मुल्क यू आर गोइंग टू डू हाइब्रिड। देखिए हसम, वी मस्ट वेरी लॉजिकल, आप हाइब्रिड कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको बोल दिया करने को। हम भी आपके मुल्क में नहीं आ रहे ना। नहीं, आपने हमेशा नहीं हाइब्रिड कर रहे हैं, ये बात कही है आपने, हमेशा ये बात, वो ठीक है भाई, आप इस बार मान चुके हैं, इट्स गुड दैट आप मान गए, हम भी चाहेंगे आप गुड आप मान गए, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लेट्स कीप द डिबेट फोकस्ड एंड आई वांट टू आस्क सौमित्रा बोस एंड अबू बकर बिन तलत। देखिए, डोंट लुक एट दिस एज अ पाकिस्तानी, आपको पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी रिप्लाई करेंगे वो बेकार में आप इमोशनल हो जाएंगे, आपको पोजीशन लेना होगा। हमारा कंट्री पुअर नहीं है, हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ये है वो है फलाना है, यू नो आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यू आर फिनिश्ड एज अ कंट्री। बट आई एम नॉट डिबेटिंग योर इकोनॉमिक सिचुएशन, आई एम आस्किंग यू अबू बकर बिन तलत एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डज दिस मेक यू प्राउड? आपको फख्र होती है ये सिचुएशन देख के? ये तो लग रहा है मोहनजोदारो के रूइंस भी इससे बेहतर कंडीशन में। ये क्या है? Arnab ji, I respect your sentiments and I was following your intro as well, whether Pakistan should host the Champions Trophy as well or not. The answer is, the happiest part is Pakistan is basically hosting the Champions Trophy 2025. और ये जो venues की आप जो sites की construction की pictures आप दिखा रहे हैं, anywhere around the world जहाँ भी construction sites होती हैं, जहाँ upgradation हो रही होती है, renovation हो रही होती है, वो ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। आप पता है, आप पाकिस्तान में रहते होंगे, मे बी आप डेवलप्ड या हाईली डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रह रहा है, इसलिए आपकी परसेप्शन अलग है। बट आपको बाहर जाके ज़रा देख लीजिए इंडिया की सिचुएशन, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया, चाइना, यूके, अमेरिका, जो बड़े कंट्रीज हैं उनसे देख लीजिए। आदत नहीं है लोगों की ऐसे सिचुएशंस में खेलने की। आपके लिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा, एक्चुअली इट्स नॉट। आई एम हॉरिफाइड। स्टार्टिंग पॉइंट कैसे करेंगे सर? स्टार्टिंग पॉइंट चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं कर सकते सर। No, it's not a starting point. It's just a renovation और जो हमने टाइम लैप्स दिया हुआ चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, we are just exactly on it और कोई भी ऐसा इशू नहीं। अगर ऐसा इशू होता तो रिसेंट 2 days बैक आईसीसी की एक कमेटी ने भी यहाँ विजिट किया और उन्होंने जाके जो रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, इट्स अ सेटिस्फैक्शन, देयर इज अ नो रेड मार्क ऑन इट। और पाकिस्तान बहुत आराम से तीनों वेन्यूज में पाकिस्तान आराम से अपने मैचेस होस्ट करवा रहा है। और जस्ट एक बात बताइए आप मुझे, एक बात, आपके पास आपने ये स्टेडियम गद्दाफी के पीछे इनका नाम लिया था, इट वाज नेम्ड आफ्टर मोहम्मद गद्दाफी 1974। मैंने सुना है कि आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आपने नेमिंग राइट्स भी दे दिए और नाम भी बदल रहे हैं स्टेडियम का, ताकि थोड़े पैसे आ जाए हाथ में। तो आप नेमिंग राइट्स देने को, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको आप कह रहे हैं कि नेमिंग राइट्स भी आपने दे दिए। ऐसा नहीं होता दुनिया में। आप भी थोड़ा सा जाइए, वंडर्स का स्टेडियम है और जितने भी यूके के स्टेडियम्स हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिए जाते? तो जस्ट
Open your eyes. बट जो रिपोर्ट जो वो रेट भी होती है ना, अलग रेट होती है. जो मुझे रिपोर्ट आई है पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि आपके पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्योंकि वो चोरी हो गए. और बैटरीज ऑफ जनरेटर्स नहीं है. See, the situation is, are you going to actually make it an ego issue and risk people's lives? No, we are not. We are not making any issue. अगर बाकी 7 टीम्स आ रही हैं इंडिया को छोड़ के तो इसका मतलब है उन्होंने सेटिस्फेक्शन शो की है. तो इशू इज बीसीसीआई, नॉट अदर टीम्स, नॉट पाकिस्तान. अगर इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, और एक और यहाँ पे करेक्शन जरूरी है स्टेटमेंट की, कि यू सेड पाकिस्तान ने इन्फोर्स किया गया बीसीसीआई ने कि आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लें. इट वाज बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हु इन्फोर्स्ड बीसीसीआई कि पार्टनरशिप मॉडल को एक्सेप्ट करे. अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे. पता नहीं आपने कैसे अपनी इस सब नाकामियों की मार्केटिंग की हुई है पाकिस्तान में. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप पार्टनरशिप मॉडल को, नहीं मुझे समझ में नहीं आता. आप जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. नो, इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग. ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर खेले. जितने भी मैचेस इंडिया के, आपके कंट्री में नहीं आ सकते. There are various reasons. बाकी 7 टीम्स आ रही हैं. नहीं, मगर आपके कंट्री में दाऊद इब्राहिम है, हफीज सईद है, मसूद अजहर है. ये लोग आपके कंट्री को चलाते हैं. You are dragging this topic over that point, तो ये चीजें फिर politicize. Of course I am dragging it. No, I am. Of course. Abu Bakr, you're not a safe country. Let's stick to our topic, please. Okay, then tell me one thing. Do people come to Pakistan for tourism from anywhere in the world? Yeah, ask your foreign minister. He was here 2 months back. Come on. Ask your foreign minister. He was here 2 months back. No, he didn't come for tourism. You have no food, you have no drinking water, you have no medicines, there is no electricity, bridges. 70% of Gilgit-Baltistan is without any energy or power. There's no major hospital in the area. This is a bad situation. यार अगर इस तरह की चीजों पे डिस्कशन करनी है तो फिर तो ये टॉपिक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा. खराब लगता है. Huge respect for you. Let's talk about the. Okay, let me get in Soumitra Bose for the contrary perspective. Soumitra, Abu Bakr and Hassam are saying everything's okay. Is this looking like okay? You must have reported so many. From so many venues across the world. Have you seen anything like this before? Anything like this? Not really, but I will always tell you that the last international match at Gaddafi Stadium was the end of April when New Zealand came to play a T20 series in Pakistan. But this tournament will go ahead in Pakistan. That's a fact. And Pakistan have to host this because if they do not host this tournament, they're going to lose out financially. They will lose out $65 million and another $4.2 million if they don't. With this hybrid model is giving them an additional $4.5 million. They need this money. They need this money to survive in international cricket, bring up the stadium the way you want them to be. But yes, Gaddafi, National Stadium and Rawalpindi are all established sites. You will only hope that they will come up to speed and host the first match. Pakistan is not playing before February 19. I think there is adequate time to prepare. And as Abu Bakr said, that there was an ICC team. What does the ICC team see? The ICC team actually sees the preparedness of the ground, of the pitch, the washrooms and the dressing rooms, and of course the stands. You would like to keep your fingers crossed and hope that Pakistan is ready to host the championship. What about the hybrid model? They say that they have thrust the hybrid model on us. What's the reality there, Soumitra? Yeah, see, the hybrid bid was the only solution for Pakistan to host because ICC wanted Pakistan to host this tournament. Because as I told you that if Pakistan did not host this ICC Champions Trophy, there would have been a financial wreck. You mentioned financial conundrum. That conundrum has forced them to accept this hybrid model. And they are a gainer. They are a gainer that I told you they are going to get about 38 crores. The additional money, revenue from the ICC. I think it is very important to understand the financial model of the ICC. What does Pakistan and the rest of the world get in terms of what BCCI gets? BCCI gets about 40% of the revenue from ICC, which is about $260 million out of the $600 million which the ICC makes. And these countries like Pakistan do not even get double digits. They are into single digits. So it is imperative for them to host it. Yes, I think you will expect that, the National Stadium, the Gaddafi Stadium will come up to speed and be ready for everything else. But you have to accept Pakistan will have to accept the fact they are a poor country in terms of riches in cricket. They can never match India. But yes, a hybrid model is a good solution. It's a good solution for Pakistan as well as for India. Yeah, for now. But problem, Shekhar, they want to host terrorists more than hosting the Champions Trophy. And that's the reality out there. You want to host Masood Azhar.
you want to host Hafiz Saeed. You know, you want to nurture terrorists in the country. Your prime minister goes and says, this is a business model for me. Right? So eventually they will have to come to terms. This is a lifesaver for them. They're getting away with it, but I don't think for too long. But they sort of have a feeling that if India-Pakistan cricket does not happen, the world will come to an end. Kuch nahi hone wala hai. I think, Shekhar, we need to make that point to them. They feel it's a great thing they're holding on to. Yeah. All the Pakistan... Yeah, please. Arnab, I think, in 2009, we saw what happened to the Sri Lankan team, right? They came in there was a big security risk and players were shot at. I think after that, teams have been very circumspect of traveling to Pakistan. And it goes without saying, India is a big global power. The way Pakistan is looking at us has changed a lot in the last 10 years as to what it is now. I think it's because of the leadership we have. But I think that goes without saying that India's power is really huge, not just in terms of BCCI, but in terms of the financial power, in terms of the cricketing power. And the fact that we have told them that we've only played a neutral speaks for itself. Pakistan really needs to get its act together. The pitchers are really talking, in terms of the garbage, in terms of the facilities, in terms of the infrastructure. We have seen, India itself, we have seen so many stadiums which are so good. There's so much of transformation which has happened. But like you had hinted earlier, like you mentioned earlier, Wasim Akram himself had mentioned that there are only 3 stadiums which really need to do a lot of work. So there is a lot of work needs to be done. This is a reality check for Pakistan. It's important for Pakistan to actually look at the mirror and do a little bit of self-reflection and find out that this is the problem they have and be a little humble about it. They cannot compete with India, and India and Pakistan cannot be taken in the same breath. India is at a different level altogether. That's quite clear. That's quite clear. Well, despite everything, I wish you best of luck, Assam. But Abu Bakr, it's terrible. I mean, I think the stadiums are a reflection of the situation in your country. You need to do something about it. Thank you very much, gentlemen.